We are the students of a shining institution of Neki Ram Global School. Good morning, respected director sir, principal ma'am, teachers, and my dear friends. I am Kakul. And I am Vansh Goyal. From class 9, we are hosts for today's morning assembly, bright and early with hopes high and spirits soaring. Let us begin this day with an atmosphere of learning and warmth. It is our fortune to get a chance to represent ourselves in front of you. Today our theme is Black Day. पुलवामा आतंकी हमले में शहीद हुए उन हिंदुस्तान के वीर पुत्रों को कोटि कोटि नमन। A Black Day refers to a significant date marked by a tragic event in a nation's history. Black Day is the most commonly associated with the Pulwama attack on 14 February 2019, where a suicide bomb killed 40 CRPF personnel, leading to widespread heightened tension with Pakistan. लौट आया है वो दिन वो तारीख फिर एक बार, लौट आया है वो दिन वो तारीख फिर एक बार, जब महसूस की थी हर हिंदुस्तानी ने अपनी हार। Gayatri month is a moment of silence to seek blessing and guardians for the day. So I am inviting Vicky and Shaksham for Gayatri month. Standards, attention. Standards, attention. Join your hands and close your eyes. Gayatri mantra starts. Om Bhur Bhuvasvaha तत्सवितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो नः प्रचोदयात्। ओम भूर्भुवस्सुः तत्सवितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो नः प्रचोदयात्। ओम भूर्भुवस्सुः तत्सवितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो नः प्रचोदयात्। ओम भूर्भुवस्सुः ओम भूर्भुवस्वः तत्सवितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो नः प्रचोदयात्। ओम भूर्भुवस्सुः तत्सवितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो नः प्रचोदयात्। Down your hands and open your eyes. Standards, attention. Standards, attention. Prayer indeed is the key to the morning and bolt of the evening that bestows peace and fortitude. I am inviting Varun and Lavish for Hindi prayer. Standards, attention. Standards, attention. Join your hands and close your eyes. Hindi prayer start. सुबह सवेरे लेकर तेरा नाम प्रभु, सुबह सवेरे लेकर तेरा नाम प्रभु, करते हैं हम शुरू आज का काम प्रभु, करते हैं हम शुरू आज का काम प्रभु। सुबह सवेरे लेकर तेरा नाम प्रभु, सुबह सवेरे लेकर तेरा नाम प्रभु, करते हैं हम शुरू आज का काम प्रभु, करते हैं हम शुरू आज का काम प्रभु। शुद्ध भाव से तेरा ध्यान लगाए हम, शुद्ध भाव से तेरा ध्यान लगाए हम, विद्या का वरदान तुम्ही से पाए हम, विद्या का वरदान तुम्हीं से पाए हम, हम विद्या का वरदान तुम्ही से पाए हम, हाँ विद्या का वरदान तुम्हीं से पाए हम, तुम्ही से है आगाज तुम्ही अंजाम प्रभु, तुम्हीं से है आगाज तुम्हीं अंजाम प्रभु, करते हैं हम शुरू आज का काम प्रभु, करते हैं हम शुरू आज का काम प्रभु। गुरुओं का सम्मान कभी ना भूले हम, गुरुओं का सम्मान कभी ना भूले हम, इतने बने महान गगन को छूले हम, इतना बने महान गगन को छूले हम, हाँ इतना बने महान गगन को छूले हम, हाँ इतना बने महान गगन को छूले हम, तुम्ही से है हर सुबह तुम्ही से शाम प्रभु, तुम्हीं से है हर सुबह तुम्हीं से शाम प्रभु, करते हैं हम शुरू आज का काम प्रभु, करते हैं हम शुरू आज का काम
सुबह सवेरे लेकर तेरा नाम प्रभु, सुबह सवेरे लेकर तेरा नाम प्रभु, करते हैं हम शुरू आज का काम प्रभु, करते हैं हम शुरू आज का काम प्रभु, करते हैं हम शुरू आज का काम प्रभु। करते हैं हम शुरू आज का काम प्रभु। Down your hands and open your eyes. Standardies, attention. Standardies, attention. सब बैठे थे यहाँ दिलरुबा की छाँव में, सब बैठे थे यहाँ दिलरुबा की छाँव में, वो सोते रहे वहाँ गोलियों के घाव में। Now let's pledge to uphold the spirit of our institution, its value and pursuit of knowledge. Please lead us in our pledge. I am inviting Chaitanya Chawla for pledge. Stretch your right hand. India is my country. India is my country. All Indians are my brothers and sisters. Brothers and sisters. I love my country I love my country. and I am proud of its Proud of its rich and varied heritage. rich and very heritage. I shall always I shall always strive to be strive to be worthy of it. worthy of it. I shall give my parents, I shall give my parents, teachers, teachers, and all elders and all elders respect respect and treat everyone and treat everyone with courtesy. with courtesy. To my country To my country and my people, and my people, I place my devotion I place my devotion in their well-being in their well-being and prosperity. and prosperity. Alone lies my happiness. Along with my happiness. Jai Hind. Standardies, attention. Standardies. जिसकी वजह से पूरा हिंदुस्तान चैन से सोता है, जिसकी वजह से पूरा हिंदुस्तान चैन से सोता है, उस फौजी को सलाम जो कभी अपना धैर्य नहीं खोता है। So now I would like to call Devansh for English thought of the day. The valuable knowledge imparted through these words often give as the motivation and guidance we need. Good morning everyone. I am Devansh Roy from class 9. Today going to deliver a thought. The rain drops does not have the voice, but he is crying the God for his martyred son. Thank you. I am inviting Lavi for the Hindi thought of the day. Good morning to all. I am Levi from class 9. Today is going to deliver a thought. इतनी सी बात बताए रखना, रोशनी है चिरागों को जलाए रखना, लहू देकर की थी जिसकी हिफाजत हमने, ऐसे तिरंगे को अपने दिल में बसाए रखना। थैंक यू एंड हैव अ नाइस डे। फौजी भी सलाम होने हैं, पर्स में परिवार और दिल में देश रखते हैं। So I am inviting Shiva for the English speech of the day. Good morning all of you. Myself Shiva from class 9. Today I am deliver the speech on Black Day. The 2019 Pulwama attack occurred on 14 February 2019 when a convoy of vehicles carrying Indian security personnel on the Jammu-Srinagar National Highway was attacked by a born vehicle suicide bomber at Letipura in the Pulwama district of the state of Jammu and Kashmir. The attack killed 40 Indian Central Reserve Force CRPF personnel as well as the perpetrators Ali Ahmed Dar, who was a local Kashmiri youth from the Pulwama district. The responsibility of the attack was claimed by the Pakistan-based Islamic terrorist group. Thank you. Now I am inviting Jyoti for Hindi speech of the day. आप सभी को मेरा सुप्रभात। मेरा नाम ज्योति है, मैं कक्षा 9 की छात्रा हूँ।
आज मैं आप सभी के समक्ष ब्लैक डे पर अपने विचार प्रस्तुत करना चाहूंगी। ब्लैक डे यह दिन भारत के इतिहास में एक काले अध्याय के रूप दर्ज है। इस दिन जम्मू कश्मीर के पुलवामा में भारतीय सुरक्षा बलों के काफिले पर कायरतापूर्ण आतंकी हमला हुआ था, जिसमें हमारे 40 से अधिक वीर जवान शहीद हो गए। यह हमला न केवल देश की सुरक्षा के लिए प्रति एक बड़ी चुनौती थी, बल्कि हर भारतीय के दिल में आक्रोश और शोक का कारण भी बना। यह दिन भारत को हर बार आता रहेगा। धन्यवाद। So now we have our news readers Vedansh, who are ready to update us with the latest happenings around the world. So I am inviting Vedansh for news of the day. Good morning to all of you. My name is Vedans from class 9. Today I am here to delivering the news. First news is BJP leader and independent MLA involved in rockery firing incident. India defeats England in the third ODI saving series with Suman Gill century. Rajani Sarvi resigns as the deputy leader of Sena. Rajat Patidar has been appointed as the new captain of Royal Challengers Bangalore for IPL 2025. Thank you. Now I am inviting Lucky for facts. Good morning to all of you. Myself Lucky from class 9. Today I am delivering Hindi facts on 14 फरवरी 2019 में पुलवामा में एक आतंकवादी हमले में 40 सीआरपीएफ के जवान शहीद हुए। 14 फरवरी 1933 में प्रसिद्ध भारतीय अभिनेत्री मधुबाला का जन्म हुआ था। 14 फरवरी 1952 को भारतीय जनता पार्टी की वरिष्ठ नेता सुषमा स्वराज का जन्म दिवस। 14 फरवरी 2012 उर्दू साहित्य अलखाल मोहम्मद का निधन। 14 फरवरी 1876 में अलेक्जेंडर ग्राहम बेल ने टेलीविज़न के लिए पेटेंट के लिए आवेदन दिया। 14 फरवरी 1989 में पहला जीपीएस उपग्रह प्रक्षेपित किया गया। थैंक यू। हैव अ नाइस डे। So I am inviting Himani for reciting a poem. सुप्रभात। मेरा नाम हिमानी है। मैं कक्षा 9 की छात्रा हूँ। आज मैं आप सभी के समक्ष एक हिंदी की कविता सुनाना चाहती हूँ। अछत राखी चंदन रोली, सब बहनों के हाथ में छोड़ चल दिए सुरवीर जंग पर। ममता की गागर से मुख मोड़, है नमन उन वीरों को जो इस कंचन देह को अमृत देकर जंग में अमिट कहानी हो गए। हिमालय भी बोना है इनके आगे, जो धरा पर गिरकर भी तिरंगे में लिपटकर आसमानी हो गए। धन्यवाद। Thank you, Himani. Now, if we think positive and be positive, then all things will become positive. So now I am inviting our director sir to say some golden words for our upcoming future. Please give a big round of applause. Very good morning. Very good morning to everyone. Good morning, sir. So today, class 9th students conducted a very important assembly on this particular theme, which is of utmost significance that we to be aware about our surroundings, about the security, and all the soldiers who have sacrificed their lives. That's why we have been considering this day as Black Day also. It becomes very important to understand that when we are standing here
in a peace, there is a unity, we are blossoming, we are progressing, and that is all because of the soldiers who are fighting the war with the terrorists and the different organizations who are trying over and over again to disrupt the peace of our nation. When we observe this day, when we are trying to mark this day as Black Day, so the students and the whole nation able to understand that why it is important to celebrate and to understand also the way these soldiers are putting their lives for us to be in such a peace, and also that we as a nation can grow with a proper unity. I would like to mention few facts. The students have aware us in a very brief manner that how this attack has happened and how India have retaliated to counter back what the terrorists did in our nation. I will be repeating the same. Around 2,500 soldiers were moving because of the security reasons from one place to another. It is a normal practice. कि लगभग 2500 soldiers दूसरी जगह जा रहे हैं अपने trucks में. So over there, one of the truck has been attacked by a suicide bomber. Suicide bomber क्या होता है कि हम तो मरेंगे और आपको भी मार देंगे. And it attacked over the truck where more than 40 soldiers were there. Because of that bomb, our CRPF personnel died over there and more than 35 soldiers were injured. It was such an act, it had not had happened before in such a manner that terrorists came inside our territory and attacked our soldiers. There was widespread anger in the whole nation that how it could have happened. Our government, our soldiers retaliated. इसका जवाब देना बनता था कि हमें काउंटर करना पड़ेगा. एंड जैश ए मोहम्मद टेररिस्ट ऑर्गेनाइजेशन है, उसने इसकी पुष्टि भी करी कि उनके द्वारा ही ये अटैक करा गया है कि जहां पर हमारे 40 से ज्यादा जवानों शहीद हो गए. और लगभग 12 दिन बाद जब बालाकोट स्ट्राइक हुआ कि दुश्मनों की बॉर्डर में घुस के हमने एयर स्ट्राइक करा और वहां पर उनके जितने भी ठिकाने थे उनको निस्तबूत करा. It is not a easy thing that when you are entering the border of the other nation and countering with your attack. And it is also important to understand that any nation will able to grow only on a condition when you will have a peaceful environment, when you are sleeping in a very peaceful manner, that you are aware that there will be no terror. You are in a security. You are in a secure. You have the freedom to do anything. I will request the whole assembly, all the students, that please observe a minute silence for all those soldiers who sacrificed their lives, because of whom we are standing in such a manner. We can talk about it and give your श्रद्धांजलि to all those soldiers. तो सभी 1 मिनट का मौन करेंगे और श्रद्धांजलि देंगे. Open your eyes.
Now let's talk about the assembly. A very beautiful, well-conducted assembly with the efforts of a very senior faculty, Rashu ma'am. Under her guidance, this particular card has been drawn. And the most important part of it that today we are observing as a Black Day. So the background is also black. And ma'am has mentioned, students have mentioned, under the guidance of Rashu ma'am, the soldiers' names with the battalion is also mentioned here, those who sacrificed their lives on this day. When we are celebrating and when we are understanding that why it is important to celebrate the lives of all the soldiers who are putting so much effort to keep us safe. I have been repeating this line over and over again, and because we need to understand that such act allow us to draw lessons from the history so that we can prepare with a much more retaliation. We prepared with a much more intelligence. We prepared with each and everything that such acts should not happen over again in our territory. यहाँ पर बहुत ही सुंदर कार्ड में कुछ कोट लिखे हुए मैं आपके सामने पढ़ना चाहूंगा। मुझे आज भी याद है वो दिन जब हिंदुस्तान रोया था। मुझे आज भी याद है वो दिन जब हिंदुस्तान रोया था। पुलवामा पर धोखे से दुश्मनों ने हमला कराया था। पुलवामा पर धोखे से दुश्मनों ने हमला कराया था। Studies, attention. मैं जला हुआ राख नहीं वही अमरदीप हूँ। मैं जला हुआ राख नहीं वही अमरदीप हूँ। जो मिट गया वतन पर मैं वो शहीद हूँ। जो मिट गया वतन पर मैं वो शहीद हूँ। National anthem means the significance, the dynasty of India. This represents the different season of India. Rule of the mind of the people be to you. So I am inviting Palak for national anthem. Stand straight. National anthem start. जन गण मन अधिनायक जय हे भारत भाग्य विधाता। पंजाब सिंध गुजरात मराठा द्राविड़ उत्कल बंगा। विंध्य हिमाचल यमुना गंगा उच्छल जल सितरंगा। तब शुभ नामे जागे तब शुभ आशीष मांगे। गाहे तब जय गाथा जन गण मंगलदायक जय हे भारत भाग्य विधाता। जय हे